In this video, we are going to revise the first topic of our syllabus, which is Introduction to Accounting Standards. Now, this topic is divided into various categories, and the first category is Benefits of Accounting Standards. अब इसके क्या benefits हैं? It helps in standardization, helps in giving disclosures, helps in comparability, prevents manipulation of data, prevents misleading accounting treatment. What are its objectives? Its objectives are same policy should be followed and the financial statements prepared are understandable, relevant, reliable as well as comparable. Objectives are important from the exam point of view. Now, what are the issues with which AS deal? It deals with 4 major issues, which are recognition, measurement, presentation and disclosure. Now, how are issued resolved? There is a accounting standard board in ICAI which finds the issue where the treatment is needed, and then the subcommittees draft who gives the public exposure draft, and then after giving it to public a final draft is prepared. इसमें क्या है कि कैसे कोई भी इशू सॉल्व होता है. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या ICAI की जो इशू फाइंड करती है, फिर वो सब कमेटी बिठाती है जो पब्लिक एक्सपोजर पब्लिक में ड्राफ्ट देती है कि वो अपने व्यूज़ दे पाए उस पर. फिर फाइनल ड्राफ्ट बनता है कमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद, और उसके बाद ICAI काउंसिल पास करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नफरा. जब नफरा बाद में MCA को ये पास ऑन करता है, फिर बाद में MCA कंसिडर करके इशू करती है. सो इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ दैट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ ICAI issue AS, but for companies MCA issues the AS. Now, Ind AS. What are the need of Ind AS or what are the need of convergence? Firstly, global capital or cross-border flow of money means इंडिया को ग्लोबली बाहर का फंड चाहिए या बाहर में ट्रांजैक्शन करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे जो हम अंडरस्टैंड कर पाए और बाहर वाले भी हमारे कर पाए. ग्लोबल लिस्टिंग in order to reduce cost or economy, uniformity, comparability of financial statements, transparency. Now, what is the strategy? Now, it is an important question. 2 टाइप्स हैं, या तो कन्वर्जेंस मतलब कि हमने जो IFRS है उसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं किया, हमने उसमें मॉडिफिकेशंस की है, चेंजेस, एडिशन या डिलीशंस अपने कंट्री के हिसाब से. अडोप्शन मतलब कि हमने एज इट इज़ ही वो अप्लाई कर लिया. नाउ, व्हाट आर द फ्यू डिफरेंसेस इन द Ind AS और IFRS? व्हाट आर द माइनर डिफरेंसेस लाइक रिडक्शन ऑफ ऑप्शन और अल्टरनेटिव. हमने IFRS में से उसमें बहुत ऑप्शंस दिए हुए थे कि ये नहीं करना वो करना, तो हमें वो रिड्यूस कर दिया. और मेजर जो डिफरेंसेस है वो है कार्व इन एंड कार्व आउट. इन शॉर्ट, कार्व इन मीन्स वी इंसर्ट समथिंग न्यू विच आर नोट इन IFRS, सो इट कैन बी formulated accordingly. Carve out means we will delete it in new Ind AS. Carve in. Carve in means additional guidance, means we will insert something given in Ind AS over and above what is given in IFRS. And carve out is differences which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS are commonly known as carve out. These 2 definitions are important. Third one is convergence. Country will develop high quality compatible AS and there would be alignment of the standards of different standard setters with a certain rate of compromise by adopting the requirements of the standards either fully or partially. Now, what are the benefits of convergence? It improves investor confidence. It improves inter-unit, inter-firm or inter-industry comparison. It helps in group consolidation. Acceptability of financial statements by stock exchanges across the globe. Now, last, there are some notes. Note first. Ind AS are IFRS converged standards which are issued by the central government of India under the
Supervision and Control of Accounting Standard Board of ICI and in consultation with NAFRA. It is important point for MCQ. इसका मतलब है कि इंड AS जो है वो IFRS के कन्वर्ट्स करके बनाए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ ICI एंड इन कंसल्टेशन विद नफरा. नफरा जो है ये रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड्स MCA को और MCA रिस्पॉन्सिबल है for approval of AS and their modification for the purpose of applicability to companies. MCA has to spell out the AS applicable for companies in India. Ind AS converged with IFRS were required to be implemented. मतलब Ind AS की एप्लीकेशन कब से हुई थी? वॉलेंट्री बेसिस पे ये 1 अप्रैल 2015 से हुई थी और मैंडेटरली कंपनीज को Ind AS 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई करना पड़ रहा था. लास्ट एक बार अगर Ind AS एप्लीकेबल हो गया तो एंटिटी को वही फॉलो करना पड़ेगा फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दिस इज़ द होलिस्टिक कवरेज ऑफ द फर्स्ट टॉपिक.